Okay, so good evening. Let's start. So today's paper that we are going to discuss is a paper set. The exam had held on 30th. Okay, 30th of September. And let's just discuss, and we are going to discuss the solved MCQs with explanation. So this paper, actually this set that we are going to discuss had come in management set. So today we would be covering the first 25 questions, and then tomorrow we will again cover the next 25 questions. So see, first question. Study the data in the table and answer the questions that follow. ये आपका पहला क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट पेपर में, सेट में, मैनेजमेंट सेट में. Study the data in the table. What is the data? See here. There are 5 departments that are given. Percentages of employees are given 2018 till and 2019. Now let us read the question. Okay. हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए हम लोग को. Fine. So Prakriti, I'll answer everything. Just wait. Let us solve 2-3 questions and then I'll ask. Consider the following table. यहाँ पे आपको एक table दिया गया है that shows the percentage distribution of employees in 5 different departments A to E in a company during the years 2018 and 19. 2018 और 2019 में आपको यहाँ पे percentage of employees दिखाई दे रहा है. There is a total of 18,000 employees and 20,000 employees during the years 2018 and 2019 respectively. ठीक है, तो 2018 में कुल मिला के 18,000, 2019 में 20,000 एम्प्लॉइज हैं. ऐसे आपको टेबल एक दिया गया है. ये टेबल के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस कुछ पूछे गए होंगे. नाउ टेबल से आपको क्या डेटा मिल सकता है? हमको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता है, राइट? 18,000 इन 2018 एंड 20,000 इन 2019. मैं अगर पूछूं कि डिपार्टमेंट ए में 2018 में कितने एम्प्लॉइज थे, तो आप क्या करोगे? 22 इज द परसेंटेज. तो हम एक्चुअल फिगर कैसे निकालेंगे? वी विल गो फॉर 22% of 18,000. That means 22 divided by 100 into 18,000, right? तब जाके हमको मिलेगा टोटल कितने एम्प्लॉइज थे डिपार्टमेंट ए में 2018 में. ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? बोलिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we have to solve this and we will get the value. Similarly, अगर मैं पूछूं 2019 में कितने एम्प्लॉइज हैं, ये सब परसेंटेजेस है, राइट? द टेबल, द नंबर्स दैट आर गिवन आर परसेंटेजेस. बट मैं अगर पूछूं कितने एम्प्लॉइज हैं, तो हम क्या करेंगे? वी विल डू 24% of 20,000. That means 24 by 100 into 20,000. So कुल मिला के आप बोलेंगे मैडम 2019 में डिपार्टमेंट ए में हमारे 4,800 एम्प्लॉइज हैं, राइट? सबको समझ में आया? सो आई विल नाउ रिक्वेस्ट एवरीवन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोपोर्शनेटली. ए बी सी डी ई. ये इस बार क्वेश्चन में आया था. द लेटेस्ट एग्जाम जब हुआ है अभी हाल ही में, मैनेजमेंट जिस दिन था, उन लोगों का पेपर 1 में ये क्वेश्चन पेपर आया था. ओके, सो प्लीज ऑल ऑफ यू सॉल्व इट so that we can understand the tough or the level in which UGC NET is giving in the exam or is putting as asking to the students. 4,800, right? So उस हिसाब से 23% of 18,000, 18% of 18,000, 29% of 18,000, 8% of 8,000. Similarly, इस तरफ भी 24% of 20,000, 26% of 20,000,
20% of 20,000, 20% of 20,000 and 10% of 10,000. लास्ट को हमको चेक करना है कि सारे टोटल मिलके उतना 18,000 and 20,000 आनी चाहिए. Quickly, all of you find the values and give me in the chat. Prakati, what are the dropped questions? You asked me a question. What are the dropped questions? Do we all get grace marks? Dropped questions, first of all, means what? Here, actually, what you're wanting to ask, please write clearly, okay? There are no grace marks in NET. ओके हिमानी 2019 में आपका वैल्यू आया है, श्रद्धांजलि 2018 में वैल्यू आ गया, हिमानी का भी 2018 का आ गया है, प्रीति 2018 ए. नाउ लेट जंप टू बी. सो सी, okay, see, I've done it like this. 22% of 18,000, 22 by 100 into 18,000, that is equal to 3960. So how would you do it? 0, 0 cut. So what you are left with? 22 and 18. You have to multiply the 18 table. If you don't remember the 18 table, then also a simple multiplication. 8 to 16, carry 1, 8 to 16, 17, right? And then 1 into 2, 2, 1 into 2, 2, right? So 6, 9, 3, and a 0 is left because we have taken just 18 and not 180. So I added a 0 at the last. So it is 3960. Okay. Same way I did 23% of 18,000, 18% of 18,000, 29% of 18,000 and 8% of 20,000. I would request everyone to give me the values of 2019. First one I had given for the A. For B, C, D, you please give me. Okay, Preeti, good. Preeti had given me. Okay, Himani is giving me. Okay, Jayanti. Okay. Jayanti, give me the value. You have just written A. What does A mean? Please give me the value. Okay, Preeti. Kati and all, please give me value. Anupama, are you able to get the calculation, Anusha? Or will I do one more? Okay, let me do the tough one. 29 divided by 100 into 18,000. So just cut 2 zeros. So you're left with 180 into 29. So what would you do? You have to multiply. So I took 29 at the top and 18 at the bottom. Whatever you can take, not mandatory. And I'll try to multiply. 8 into 9, 72. I wrote 2, I carried it 7 here. 8 to 16. 16 plus 7 is 23. 1 into 9, 9. So you have to write here. And 1 into 2, 2. So what value you got? 2. You have to add it. 3 plus 9 is 12. And 4 plus 1, 5. 5 double 2. We have left one more 0. So I'll add one more 0. 5 double 2, 0. See the value? Okay. So for 2019, Anusha, what is the value of C? Can you please write me in the chat? Jayanti, Smriti. Okay, Smriti has given me all the values. Good. Prakati, give me the value. Shama, give me the values, please. Shraddhanjali, give me the value. Okay, Shwetalina. Priyanka, give me the value, please. Okay, you have given me 2 values. Anusha is giving. Okay, Shraddhanjali.
Fine. Jayanti, has not given me. Deepika, please try to answer. Okay. So you know the procedure, right? So let us see the values of 2019. Department A 4800, Department B 5200, Department C 4000, Department D 4000, and Department E 2000. Okay. So what I did in the table, this is how I did. Okay, in the exam, I'm showing you the right way how to do it. Now see. Departments, I did a table. This is the departments, 5 departments, 2018 percentages and 2019 percentages and the numbers that we found now, right? Clear till this much or any doubt? Anyone has any doubt? No. Very clear. Do you have any doubt till now? No doubt, ma'am. Okay. So let us go to the first question, right? First question is, in which department the variation represented by absolute numbers in employee strength is maximum in 2019 with reference to 2018? Is it Department A, Department B, Department C, not C, Department D and Department E? हमको ये समझना है, इनमें से चारों डिपार्टमेंट का ऑप्शंस आपको दिया गया है, A, B, D, E. विच डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वेरिएशन है नंबर्स के हिसाब से, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के नंबर के हिसाब से, इज मैक्सिमम इन 2019 विथ रेफरेंस टू 2018? ओके, तो कितना ज्यादा वेरिएशन है इन लोगों के बीच में? यस, okay, I got an answer. Let me see that. Okay, Shwetalina, Preeti, Shwetalina, Krishna, Smriti, Anusha. Preeti answer change. Himani gave a different answer. Prakriti, Anupama again a different answer. Priyanka. Okay. Let's go back to the table. Deepika gave a different answer. Let's go back to the table. अभी ये टेबल आप लोग देखिए, राइट? हमको पूछा गया है कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वेरिएशन है, राइट? कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वेरिएशन है? अनदर कांस्टेंट इज देयर, 2019 में ज्यादा एम्प्लॉयज होनी चाहिए कंपैरेटिव, नहीं ऐसा नहीं, 2019 और 2018 को कंपेयर करके इन दो कंपनियों के बीच में, इन दो इयर्स के बीच में सबसे ज्यादा वेरिएशन इन नंबर्स कौन से कंपनी में है, कौन से डिपार्टमेंट में है? ओके, दे आर नॉट सेइंग दैट 2019 में ज्यादा होनी चाहिए, 2020 में ज्यादा होनी चाहिए, 2018 में ज्यादा होनी चाहिए. दे आर नॉट सेइंग दैट. They're simply asking the variation in the numbers of employee strength. So variation हम कैसे निकालेंगे? We will find the difference. 3960 minus 4800, 4140 minus 5200, 3240, ऑप्शन सी तो दिया गया नहीं है, मत करो. 5200 minus 4000, 1440 minus 2000. So you will be finding the answers 840, 1060, 1220 and 560. तो इनमें से सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में है? 1220. Okay, so 1220 option is mentioned in, see, D, and D belongs to option 3.
Okay, so let me see कितने लोग इसको सही किए. All of you please mark. Okay, please mark yourself. After 10 questions I'll ask आप लोगों को कितना स्कोर हुआ है. Yep. Okay, fine. So let us move to the next question. Question number 2. Second question, let me mark so that I won't be confused, right? Second question. Based on the same DI. See, second question hai, what is the appropriate percentage? What is the appropriate percentage increase in the number of employees in Department C in the year 2019 with reference to the year 2018? ठीक है, कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज हमको बोलना है, किस चीज के बारे में बोलना है? इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2018 और 2019 के बीच में आपको देख के कितना क्या ग्रोथ हुआ, आपको वो परसेंटेज उनको बोलना है. सो ऑप्शंस आर गिवन, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? No one? Or you're trying? सी डिपार्टमेंट में 2018 में कितने एम्प्लॉइज थे? ओके, मिस स्मृति, they are asking you very simple question. They are asking you 2000, हम लोग डिपार्टमेंट सी ही देखेंगे. ओके, डिपार्टमेंट सी में 2018 में कितने एम्प्लॉइज थे? 3240 2018 में, और 2019 में कितना थे? 4000. Now you know from where we got 3240 and 4000, because we had already done that calculation. Percentage को देख के 20% of 20,000, so we got 4,000. So what they are asking, percentage increase, number कितना बड़ा है? Find the difference. Find the difference. 10 minus 460, 9 minus 2, 760 एम्प्लॉइज बढ़े हैं. 2018 से 2019 के बीच में 760 नए एम्प्लॉइज ज्वाइन किए हैं. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुए हैं. बेस ईयर क्या होगा आपका? बेस ईयर हमेशा 2018 होगा. सो व्हाट विल यू डू? 760 डिवाइडेड बाय 3240 into 100. आप लोग क्लास खत्म होने के बाद YouTube में go to GET2NET and find out the percentage videos. ये जो conceptual questions आपके दिमाग में आ रहे हैं, that can be clarified. अगर फिर भी कोई डाउट है, tomorrow we have a class, you can ask me. Okay, so 760 divided by 3240 into 100. यहाँ हिमानी but percentages चाहिए. प्रीति आपका 1 आया है and जयंती आपका 2 आया है. Kindly cross check. Kindly cross check with the answers. Okay, so quickly give me the percent. No one? Deduct. You can, will I do it or will I wait? Okay,
So let us deduct this number by 4. 414. 3 is left. 36. 49, 36. Here. 48, 32. Okay. And 414. So 49 and 81. You can, okay. 49 and 81. Is it further divisible? No, you cannot divide because 7 square is 49 and 9 square is 81. Both are prime numbers. So you have to divide the number. How you are going to divide? 4900 divided by 81. Just now we did a multiplication division. So 81 into 2 is 324. Put it here. 324. 10 minus 4 is 6. 7 minus 2 is 9 minus 2 is not 9. 8 minus 2 is 6. Why 8? Because I have already taken 1 here. Okay. 660. Now do 81 into 3. 3. मैम 1900 होगा. 24. Right. Are you people be able to do? मैम 80. Sorry, this is. 49 की जगह 1900. Are you people able to do the division? Let me do it once more. Just a second. Let me clear everything and do it once more from the starting because there is a confusion. Okay. So simple, we are left with 760 divided by 3240 into 100, right? So let us divide once more. I think you people have some confusion in the divisions. So let me show you how to cross multiply, how to solve this type of question, how you can do it. Okay, so what you can do? Yes, Shwetalina, that's correct. So first, simplify, cross the 2 zeros that you have. Okay, next what you can do? 76 divided by 4. You can divide it by 2 also, but you can divide it by 4. Once you divide it by 4, the answer is 19. Okay, and 324 divided by 4. If you divide it by 4, the answer is 81. In the previous case, there was a simple mistake which I did. So now what we are left with? 1900 divided by 81. Okay. Now 81 into 1 we cannot put. Well, let us go for 81 into 2. 16, 162. If I go for 181 into 3, 243 will be the number. It will be a big number than 190. So I have to put this number, 162. And this side I'll put 2. What is the denominator that I'm getting? 8, 2, and 0. So here I can put 81 into 3, 243. See, here you can stop because you have to parallelly look at the options. 2%, 2.34%, 23.45. So the option that you're getting is 23. So you can stop here and you can easily mark this option to be 3. Okay, so the answer is 3. Understood or not? Any problem? Please ask me. Himani, Preeti, did you understand where you did the mistake? Yes, ma'am. Okay, Preeti, you changed. Okay, fine. So did you all understood?
Smriti, Yes, ma'am. did you understand? Yes, madam. Okay, let me move to the third question. If 300 employees had left the department B at the end of 2018, then how many new employees joined in 2019? अगर 2018 में साल के आखिरी में डिपार्टमेंट बी से 300 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे और चले गए, बी में एक्चुअली कितने एम्प्लॉयज थे 2018 में? 4140। 300 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो आप क्या करोगे? -300 करोगे, एक वैल्यू निकलेगा आपका। वो क्या पूछ रहा है? देन हाउ मेनी न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइंड इन 2019? 2019 में क्या फिगर था? 5200। सो हाउ वुड यू फाइंड हाउ मेनी न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हैं? 300 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए 2018 के एंड में। 2019 में आपके पास 5200 एम्प्लॉयज हैं। आप कैसे पता करोगे कि कितने एम्प्लॉयज एक्चुअली नए ज्वाइन किए हैं? जो यहाँ वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू को 5200 से आपको डिडक्ट करनी है। देन यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर दैट हाउ मेनी न्यू एम्प्लॉयज हैड जॉइंड। ओके, गिव मी द आंसर क्विकली ऑल ऑफ यू। ओके, प्रीति, स्मृति, दीपिका, श्रद्धांजलि, अनुषा, अनुपमा, जयंती। ओके, आई एम वेटिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। Okay, yes, Subhashri, you are correct absolutely in the previous question. Priyanka, okay, Krishna. Fine. So आप लोगों का आंसर्स ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट है। ओके, सो लेट अस सी। देखिए 300 एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट बी हैड लेफ्ट एट द एंड ऑफ 2018। सो आपके पास है 4140 माइनस 300 इज इक्वल टू 3840। 2019 में आपके पास 5200 एम्प्लॉइज थे। ये कहां से आया? ये शुरुआत में वी हैड गॉट दिस वैल्यू, राइट? वी हैड फाउंड आउट। एंड न्यू एम्प्लॉइज कितने ज्वाइन किए हैं? 5200 माइनस 3840, सो दैट कम्स टू 1360। योर ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? Fine. Let's move to question number 4. Okay, Shraddhanjali and Preeti. If the average monthly salary of employees in the department A was 24,000 in 2018, 2018 में department A में 22% employees के average sorry 22% जो एम्प्लॉइज हैं उनका वैल्यू कितना था? 3960। सो 3960 एम्प्लॉइज के एवरेज सैलरी था 24,000 एवरेज सैलरी। तो टोटल सैलरी आप कैसे निकालोगे? 3960 into 24,000 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू, दैट इज द टोटल सैलरी, है ना? घर पे 5 लोग हैं, मम्मी ने बोला कि आप
एवरेजली हमारे घर में 5 रुपए खर्च होता है दिन का। 5 लोग हैं, एवरेज में 5 रुपए खर्च होता है। सो टोटल कितना खर्च होता है, इनटू आप कर लोगे तो टोटल 25 रुपए दिन का खर्चा होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। ओके, सो टोटल एम्प्लॉयज हैं 3960, एवरेज सैलरी है 24,000। सो टोटल कितना खर्चा होगा, 3960 इंटू 24,000। प्लीज डू इट ऑल ऑफ यू। ओके, मिस स्मृति, अनुषा, हिमानी, प्रीति। ओके, दीपिका, श्रद्धांजलि, प्रकृति, जयंती, प्रियंका। ओके, यस, सब लोग सही कर रहे हैं एंड द आंसर इज आल्सो करेक्ट। सी, 24,000 into 3960, so that comes to 95044 4 times 0, so that is equal to 9.5 crore. Okay, Ma'am, please fifth repeat DI again this question. देखिए, what is the ratio of the number of employees in the department E in 2018? 2018 में डिपार्टमेंट ई में कितने एम्प्लॉइज थे, ये फिगर, how many employees were there? All of you had done 1440, and डिपार्टमेंट डी 2019 में कितने एम्प्लॉइज थे, 4000, 20% of 2000, so that comes to 4000. So your question is, or the net is asking you, what is the ratio of the number of employees in the department E? Ratio क्या है? Okay, 1440 divided by 4000. What is the ratio? तो आप लोग सारे रेशियो निकालिए। Yes, yes, okay, Priyanka, Imani, Preeti, that's good. Anusha, Anupama, okay, Anusha, I can understand. Shraddhanjali, Shwetalina, okay.
Yes, this is very easy, right? So just deduct 1440, 4000. You can straight away divide by 4, right? 4 3 12, 24, 4 6 24. This can be 400. You can again divide it by 4. 4 9 36, and this is 25. So we rewrite the value of 9 by 25 as 9 is to 25. So option 1 is correct. Clear all of you? किसी को भी डाउट है? ये पेपर 1 सेट में आया था इस बार 30th को जो एग्जाम हुआ था मैनेजमेंट बच्चों का, ये क्वेश्चन आया था. अभी हम लोग सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट Okay, can you all see the screen? No, ma'am. Okay, that's good. Okay, so let's move to the 6th question. Okay, the 6th question. Okay, the action plan arising from academic and administrative reform committee appointed by the UGC with Professor Gnam as its convener included which of the following? ठीक है, एक एक्शन प्लान हुआ था arising from academic and administrative reforms committee. यूजीसी में ऐसे बहुत सारे कमिटीज टाइम टू टाइम होते हैं. तो one such committee was headed by Professor A. Gnam, GNANAM. वो कन्वेनर थे. तो उनका रिकमेंडेशन क्या था? ओके, प्रकृति had given an answer. Is it choice-based credit system, vocationalization of higher education, curriculum development, deciding on the number of student faculty contact hours during a semester, skill-based courses and programs? इनमें से कौन सा correct answer है? आप लोग choose करो. Prakriti had given an answer. Okay. Shweta, Lina, Smriti. Okay. Smriti, Jayanti, Preeti. That's good. Answer करो. Okay. Shraddhanjali, that's good.
ठीक है, let us discuss this answer. Okay, we found that many of the students have given answer. ये जो कमिटी था प्रोफेसर नाम ए नाम GNAM, ओके, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केब बोलते हैं, in its 46th meeting held on March 8 to 9 1991 considered the report of the UGC committee on alternate models of management. तो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसका टॉपिक था ऑल्टरनेट मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो किसके चेयरमैनशिप पे वो रिपोर्ट सबमिट हुआ था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर ए नाम, ओके, इन द ईयर 1991. So he recommended that choice based credit system should be there, curriculum development should be there, and deciding on the number of student faculty contact hours during a semester. So he gave three important factors, A, C, and D. So the correct option is 2, option 2. Okay, clear all of you? Any doubts? Any doubts? Okay. अंडरस्टूड. सो तीन चीज के बारे में वो रिकमेंडेशन दिए थे. एक तो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और एक है आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, सॉरी, हाँ, not vocationalization, sorry, curriculum development, and the third one is deciding on the number of student faculty contact hours. तीनों चीजों के ऊपर प्रोफेसर ए गगनाम ने रिकमेंडेशन दिया था. ओके, fine. Let's move to question number 7. Under which of the following objectives of Millennium Development Goals? हमारे दो थे, एक था MDG और एक था SDG, okay, Sustainable Development Goals, and one was Millennium Development Goals. The progress in the world as a whole has been least satisfactory. इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव एमडीजी के 8 ऑब्जेक्टिव थे, 8 ऑब्जेक्टिव में से वो कुछ दिए हैं आपको. The progress in the world as a whole has been least satisfactory. Please try. Halting, the options are halting by 2015 and beginning to reverse the spread of HIV, eliminating gender disparity in primary and secondary education by 2015, reducing the proportion of population below national poverty line by 2015, and reducing by half proportion of people who suffer from hunger by 2015. Okay, Krishna, Prakati, Priyanka, Anusha have given. Okay. प्रीति, श्वेता, लेना, दीपिका, ठीक है. ओके, फाइन. सो देखो 8 गोल्स क्या क्या है. पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर.
So what was the target that was fulfilled? 300 million workers जो लोग below poverty, who lived below the $1.25 a day poverty line in 2015. Okay, more than 90 million children under age 5 are still undernourished and underweight. Goal 2, achieve universal primary education. तो प्राइमरी एजुकेशन जिसमें लड़की और लड़कों को इक्वली दिया जाता है प्रेफरेंस पढ़ने के लिए, right, reached 91% in 2015 up from 83% in 2000. नेक्स्ट है आपका गोल 3, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन. यहाँ पे क्या हुआ? वुमेन मेक अप 41% ऑफ पेड वर्कर्स आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर. एक यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 35% इन 1990. इवन पार्लियामेंट में वुमेन का जो भी प्रोपोर्शन था वो भी डबल हो गया है, राइट, इन द नेक्स्ट और इन द पास्ट 2 years, लास्ट 2 years के लास्ट 20 years के अगर हम कैलकुलेशन देखें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट हैज आल्सो बीन डबल्ड. गोल 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी. यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है. देखिए, between 1990 and 2015 the global under mortality rate has been declined by more than a half, dropping from 90 to 43 deaths per 1000 live death. Okay, बहुत ड्रॉप हुआ है. That's a very good record. गोल 5 था आपका एमडीजी का, improve maternal health. जो maternal mortality ratio था almost like it has been cut in half. Okay, and reduction had occurred since 2000. Goal 6 क्या है? Combat HIV और AIDS, malaria and other diseases. यहाँ पे क्या हुआ है? आधा हो गया है, have halted by 2015 and reversed the spread of HIV AIDS. Okay, so this is a good thing that happened, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है. गोल 7 है आपका एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. यहाँ पे क्या हुआ है? फॉरेस्टेशन इंक्रीज हुआ है, डिफॉरेस्टेशन में स्लाइड डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट लोगों का नेचुरल एक्सपेंशन हो पाया है, लाइक इट हैज रिड्यूस्ड द नेट लॉस ऑफ फॉरेस्ट. जितने भी फॉरेस्ट हम रिड्यूस कर रहे थे अभी वो घट गया है. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड द लास्ट गोल इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप for development. Okay, develop a global partnership for development. यहाँ पे देखो, official development assistance from developed countries increased by 66%. और क्या चाहिए? 66% डेवलपमेंट हुआ है, right, from 2000 to 2014. ये सब देखने के बाद let me go back to the options once more. Do you want to change your options? इनमें से कौन सा टारगेट सबसे लीस्ट सेटिस्फैक्टरी हुआ है, फुलफिल नहीं किया है अपना? ओके, डू यू एनीवन वांट्स टू चेंज द ऑप्शंस? ओके, फाइन. द करेक्ट आंसर to this question is answer 4. क्यों? देखो, आपके जो हंगर वाला है, अभी भी 90 million children are under age 5 are still undernourished and underweight. उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है. 300 million workers तो below poverty line में है. Okay, so that is the reason it is said that this is the goal. Goal number 1 is the least, or you can say has the least performance, like it's not satisfactory up to mark. Okay, so let's move to your next question. That is your question number 8. This is a very simple question. In a code language, if animal is written as Laimna, Laimna, then circle will be written as what? This is the latest explanation, guys. Nowhere you will get. Okay.
Okay, Krishna, Preeti. Deepika. Jayanti, Anusha. Subhashri, Shweta, you also please try to give the answers. Prakriti, Priyanka. Smriti, you are saying option 1. Okay. There are tie-ups between 1 and 2. Why there is a confusion? I don't know. Imani, okay. Anupama, okay. Shraddhanjali, good. Please take your time and answer. Okay, no problem. We are not in a rush mood. Preeti, you changed your answer. Okay. Adhi, please, can you just cross-check your answer? You gave 2. So kindly cross-check, please. Shwetalina, 1. Anusha, 1. Okay. See how you are going to solve these questions. Those who, the students who are new, what we do, this is the general format which I say to all my students. You will get rough around 20 minutes time before starting any exam. So you have to recall, or if you can't recall, just write it in the paper. A to Z, the alphabetical series along with the letter positions. Okay, and this is the reverse side. From back A to Z, this is the reverse side of alphabetical series. Now the question that is given is animal. A-N-I-M-A-L. You can see here. Okay. A, letter position is 1. N, letter position is 14. I, letter position is 9. M, letter position is 13. Yes, Adi, correct now. A is 1 and L is 12. Okay. Now what they have said? Lamina. So if you can see L, just write the words and just write the letter positions. 12. The extreme left has come here. Or if you can simply number it like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what they have done, they have done 6, 5. These two are constant. They have not changed these two. 3, 4, and this is 2, 1. Either way you can do. Either you can go for just the number positions as per the alphabetical series, or you can give your positions as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you can systematically design it. Similarly, circle. You can write here 1, 2, 2 ways I have shown. 3, 4, 5, 6. So what will be your answer? Your answer should be 6, 5, 3, 4 is as it is. 6, 5, 3, 4, 2, 1. Okay. Easily. Vice versa. Either you can get your answers like this, or the positions that I have given. C, the letter position is 3. Right? C is 3. I, the position is 9. Either way you can do. So the correct answer is 1. Okay. Clear all of you? Those who got 1 and those who got 2, who didn't do the
correct answer? Who were not able to do it? Did you understand? Yes, ma'am. Okay. Fine. So let's move to question number 9. In a family of 4, A, B, C, and D, D is taller than B. D is taller than B. See, how am I doing? You can do it in the same way. C is the shortest of the all. सबसे छोटा C है. A is taller than only one person. A सिर्फ एक ही बंदे से ज्यादा बड़ा है. Right? तो देखो आप इस हिसाब से सजा सकते हो कि नहीं? You got the arrangement? Now let me know. इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? Number of persons taller than A is the number of persons shorter than B. D is tallest. A is shortest. No one is shorter than C. Only one person is shorter than B. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलिए. ओके इनमें से कौन सा करेक्ट है? समझ में आ गया? सिंपल एक लाइन दिए हैं वो. In a family of 4, A, B, C, and D, D is taller than B. C is the shortest of all, and A is taller than only one person. The number of persons taller than A is the number of persons shorter than B. करेक्ट है? A से कितने लोग बड़े हैं? 2. Is the number of persons shorter than B. B से 2 ही लोग छोटे हैं. So ये ऑप्शन करेक्ट है. D is tallest. D सबसे बड़ा है. A सबसे छोटा है? नहीं. No one is shorter than C. Correct. Only one person is shorter than B. Wrong. So आपके correct statements क्या क्या हैं? A, B, D. Right. So उस हिसाब से आपका correct answer क्या हुआ? The correct answer is option 2. Okay. Understood all of you? Fine. Let us move to question number 10. Okay, statement 1 and 2. This is the most loved questions format of UGC NET. There are 2 statements. 2 statements यहाँ पे दिए गए हैं. Statement 1 में क्या पूछा जा रहा है? A research hypothesis is a tentative statement postulating a relationship between factual and conceptual elements of the variables. Okay, research hypothesis एक tentative statement है जो कि relationship postulate कर रहा है between factual and conceptual elements of the variables. A researcher, statement 2, a researcher sets up a null hypothesis. क्यों set करता है एक null hypothesis? So that the deduced consequences of a research hypothesis may be directly tested. Okay, a researcher sets up a null hypothesis so that the deduced जितने भी हम छांट के जो consequence हमारा निकल के आएगा of a research hypothesis may be directly tested. In light of the above statements, choose the correct answer. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and 2 are true. Statement 1 is correct, but statement 2 is false. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So इनमें से आंसर कौन सा सही है बोलिए. Okay. Priyanka, Anushka, Anusha, Krishna,
हिमानी, जयंती, स्मृति, प्रीति, दीपिका, अनुपमा, श्रद्धांजलि, ओके। Okay, so let's try to answer this question. What does this hypothesis mean? पहले तो हमको hypothesis के बारे में जाननी चाहिए ये question answer करने से पहले. A hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. एक से ज्यादा वेरिएबल के बीच में अगर कोई स्टेटमेंट, कोई रिलेशनशिप हम जानना चाहते हैं, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. Okay, a hypothesis is a specific testable prediction about what you expect to happen in your study. आपके स्टडी में क्या हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, that we want to test, that is known as hypothesis. To be complete, the hypothesis must include three components. एक है variables, population and the relationship between the variables. तीनों चीजें बहुत ही important है. एक आपके variables, एक आपके population, एक आपके relationship between the variables. हमेशा याद रखिए, hypothesis का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही होना चाहिए. No, hypothesis predict करता है. Okay, while the hypothesis predicts what the researchers expect to see, the goal of the research is to determine whether this guess is right or wrong. Okay, suppose my hypothesis, suppose I want to find out that whether there is any relationship between rainfall and production. So what will be my hypothesis? I am predicting that there is no, or there is or there is an impact of rainfall on production. There is a significant difference between impact and between rainfall and production. ये मैं prove करना चाहती हूँ. It's a statement जहां जिसके बदौलत मैं दो variables के बीच में relationship determine कर सकती हूँ. Okay. और एक चीज के बारे में लिखा गया था. Subhashri had given option 3. Let's see. The null hypothesis, null दो hypothesis हैं, एक है null hypothesis, एक है alternate hypothesis. Null hypothesis को हम लोग ऐसे लिखते हैं H0 और H0. It's a general statement or default position that there is no significant difference between two measured phenomena, or that two samples derive from the same general population. नल हाइपोथेसिस क्या बिलीव करता है कि दो सैंपल एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल्टरनेट पूरा उल्टा है. ऑल्टरनेट बिलीव करता है कि देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो यू गॉट टू नो व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, यू गॉट टू नो व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस. नाउ लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन वंस मोर. A research hypothesis is a testable statement postulating a relationship between factual and conceptual elements of the variables. A researcher statement 2 sets up a null hypothesis so that the deduced consequences of a research hypothesis may be directly tested. इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन हमको चूज करनी चाहिए? Does anyone wants to change the option?
Okay. So, okay, fine. All of you are changing your options. That's good. That means you have tried to understand. Yes, the correct answer is option 3. Statement 1 is correct. It's a tentative statement and we are trying to find out the relationship between the variables. But null hypothesis, the problem here is here. Deduced consequences of a research hypothesis may be directly tested. No, nowhere it is correct. So only statement 1 is correct and statement 2 is wrong. Okay. So how many of you, what are your scores? Quickly let me know. We have completed 10 questions. What are your scores? Yes. You can give me in private mode also, okay? Preeti, Priyanka, Shraddhanjali, Anupama, Krishna, Anusha, Subhashri, Shweta, what are your scores? Adi, Anusha 6. Okay, sorry. Krishna, okay, fine. Deepika, Jayanti. Fine. So let's move to question number 11. Okay, Shwetalina, that's good. Very good. Okay. Now see, question number 11. According to Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000, the nighttime noise standard prescribed for educational institutions is nighttime noise standard prescribed for educational institutions. Okay. According to Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000 के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रात के टाइम पे कितना नॉइज अलाउड है? Is it 55 decibel? Is it 50 decibel? Is it 45 decibel? Or is it 40 decibel? Shwetalina, Priyanka, okay, you have given your options. Okay, no. Anusha, quite a good answer. Okay, no problem. Shraddhanjali, Anupama, Preeti, Bapre. There are multiple options. The correct answer is 45 decibel. At the night time, the prescribed standard for educational institutions is 45 decibel. Other than that, I would like to give you certain information here. Okay. Category of area zone wise, डे टाइम और नाइट टाइम का इनका हम लोग दिए हैं. इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम पे 75 डेसिबल तक हम आवाज नॉइज कर सकते हैं, रात को 70. कमर्शियल एरिया में डे टाइम में 65 एंड नाइट में 55. रेसिडेंशियल एरिया में डे में 55 डेसिबल एंड नाइट में 45 डेसिबल. साइलेंट जोन में डे में 50 डेसिबल तक अलाउड है और नाइट में 40 डेसिबल. डे टाइम मतलब 6 से लेके 10 बजे तक, रात 10 बजे तक. प्रीति, कंफ्यूज्ड एंड यू हैव चेंज्ड योर ऑप्शन एंड द ऑप्शन इज रॉन्ग. रात नाइट टाइम मींस रात 10 से लेके 6 बजे तक. ओके. डीबीए जो लिखे हैं ना हम लोग, इसका मतलब है टाइम वेटेड एवरेज ऑफ द लेवल ऑफ साउंड इन डेसिबल्स ऑन स्केल ए, जो कि विच इज रिलेटेबल टू ह्यूमन हियरिंग. ह्यूमंस को आराम से जितना हम सुन सकते हैं, जो कैपेसिटी है ईयर्स का, उसके हिसाब से एवरेज एक लेके हम लोग यहाँ पे दिए हैं, डेसिबल ए एवरेज, डीबीए.
denotes the frequency weighting in the measurement of noise and corresponding to frequency response characteristics of the human ear. Okay, so educational institutions रात को 45 डेसिबल ए के लिए अलाउड है. साइलेंट जोन, प्रीति, यस, इन साइलेंट जोन हॉस्पिटल्स, ये चारों जगह पे ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे साइलेंट जोन है, वहां पे रात को हम 40 डेसिबल तक ही नॉइज कर सकते हैं. डेसिबल ए एवरेज, ऑन एन एवरेज we can go for it. Beyond that it is not allowed. Okay, clear all of you? Question number 12, ये एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हैं लॉजिकल रीजनिंग में. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बट विद डिफरेंट एग्जांपल. यू पीपल कैन गो बैक एंड सी द लॉजिकल रीजनिंग MCQs with explanation in GET2NET videos. वहां पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा. Okay, so typical Aristotelian syllogism and technical names in Nyaya philosophy. We have Nigamana, Upamana, Udharana, Hetu, Pratyajna. This is from logical reasoning part. Indian philosophy and Pramana added. Examples are Socrates is immortal because he is a man. Whoever is a man is immortal, Pythagoras. Socrates is a man who is invariably immortal. Therefore, Socrates is immortal. This question has been directly taken from Indian philosophy book. Okay, I can share the link from where UGC have taken this question. It's a direct question as it is they have picked up. So match list 1 with list 2. Okay, आप लोग सोचने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ. निगमना, उपमना, उपनया, उदाहरणा, हेतु, प्रतिज्ञा है क्या? प्रतिज्ञा, the first members of the syllogism are called the pratyajna or proposition. उसको हम proposition भी बोलते हैं. It is a logical statement which is to be proved. Okay, pratyajna is a logical statement जिसको हमको prove करनी है. It is the declaration of that which is to be established. जो हम establish करना चाहते हैं ये उसका declaration है. It is just statement of one's position and consists in the assertion of some unperceived quantity on character. इसको हटाइए. जस्ट इतना याद रखिए कि प्रतिज्ञा और प्रपोजिशन ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो प्रूव करने, विच इज टू बी प्रूव्ड, और या फिर ये एक डिक्लेरेशन है जो एस्टैब्लिश करने के लिए हम कोशिश करते हैं. The propositions is only a suggestion or a mere probability. Okay, for example, the hill is fiery. The hill subject है और minor term है. Paksha and fiery is the predicate or the major term, the sadhya. ठीक है, fine. हेतु क्या है? Second member of the syllogism. हेतु का मतलब है reason. It refers to the statement of the mark or the sign linga. हेतु को हम लिंग के हिसाब से लिंग भी बोलते हैं. और हम देखिए, it states the presence of the middle term called hetu or ground, sadhana or means of proof, linga or the sign in the minor term. ठीक है, पूरा का पूरा कितना मतलब मिल गया आपको हेतु के बारे में, रीजन के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे because it smokes, क्यों हम लोग यहाँ पे एक रीजन दे रहे हैं, right? So that is why it is known as hetu. Gautama states that hetu is the means for establishing sadhya. Either आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दो या नेगेटिव एग्जाम्पल दो, लेकिन आपको अगर साध्या एस्टैब्लिश करना है तब आपको हेतु देना पड़ेगा. नेक्स्ट है आपका उदाहरण. उदाहरण मतलब एक एग्जाम्पल, राइट? उदाहरण और एग्जाम्पल, जैसे धुआं अगर है तो आग आएगा ही आएगा, हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं. सो दिस मीन्स
एग्जाम्पल, जस्ट रिमेंबर द की वर्ड इज एग्जाम्पल. नेक्स्ट, उपनया. ये है आपका फोर्थ मेंबर ऑफ द सिलोइज्म कॉल्ड उपनया और द एप्लीकेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इट कंसिस्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल प्रपोजिशन with the example so the minor term of inference or the minor term of inference. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड दे रहे हैं. मतलब जैसे बोला जाता है, जैसे जैसे हील स्मोकी है ना, वैसा किचन भी है, धुआं धुआं निकलता है. जैसे हम चूल्हे पे अगर रसोई करते हैं तो धुआं 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 निकलता है. तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पे हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, सो लाइक द हर्ट किचन द हिल इज स्मोकी. ओके, स्मोकी इज द उपनया और द एप्लीकेशन. लास्ट इतना सारा हो जाने के बाद हमको कंक्लूजन जरूरत है. कंक्लूजन को बोला जाता है निगमना. फिफ्थ एंड द लास्ट मेंबर ऑफ द सिलोइज्म इज निगमना और कंक्लूजन. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोबेंडम. सिंपल याद रखिए कि इसको कंक्लूजन भी बोला जाता है. ये पांचों मेंबर्स को क्या क्या हो गया आपका, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनया एंड निगमना, इनको अभयाभास भी बोला जाता है. ओके, एंड द एग्जाम्पल इन केस ऑफ निगमना इज द therefore the hill has fire. So let us go back to the question and you people can try once more. इनमें से कौन सा क्या होना चाहिए? Socrates is mortal because he is a man. Whoever is a man is a, yes, whoever is a man is a mortal. Obviously ये देखो example, whoever is a man, जो भी man इंसान है वो mortal है. पाइथागोरस एग्जाम्पल, तो ये तो हो गया आपका उदाहरण. ओके, देखिए यहाँ पे, सो सी का ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट उदाहरण आ रहा है. तो उस हिसाब से आपका दो ऑप्शन बच रहा है, ये दो, बाकी दो तो कट गया. एंड कंक्लूजन इज नोन एज योर निगमना, राइट? So fine, tell me the answer. Okay. So the correct answer, see here, I have given in the table format. Socrates is mortal, इसको बोला जाता है प्रतिज्ञा और प्रपोजिशन. द हिल हैज फायर बिकॉज ही इज अ मैन, यहाँ पे हम लोग रीजन लगा रहे हैं, हेतु. Whoever is a man is a mortal, पाइथागोरस उदाहरण. और इस तरफ एग्जाम्पल के हिसाब से whatever has smoke has fire, एग्जाम्पल किचन. उपनया मतलब एप्लीकेशन. Socrates is a man who is invariably a mortal. The hill has smoke which is invariably associated with fire. निगमना मतलब final conclusion. Therefore Socrates is mortal. Therefore the hill is fire. Okay? So आपका correct option है 1. Clear all of you? किसी को doubt है अभी? Clear, ma'am. Any doubts? Okay. So let's move to question number 13. Which of the following statements are correct? Internet is larger than intranet. Intranet is larger than internet. Internet and intranet are same. Internet is a network of networks. World Wide Web is an example of intranet. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
Okay. Fine. Before answering this question, we must understand what is an internet, what is an intranet. इंटरनेट में क्या है ना, ये एक छोटा सा है, लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है. नॉर्मली हम लोग www सॉफ्टवेयर यूज करके इंट्रानेट यूज करते हैं. छोटा लोकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, घर पे आप इंट्रानेट यूज करोगे. इंटरनेट क्या है? अ सिस्टम आर्किटेक्चर जो कि पूरा का पूरा रिवोल्यूशनलाइज कर लिया है, पूरा रिवॉल्यूशन एक लिया है कम्युनिकेशन मेथड के ऊपर पूरा, by allowing various computer networks around the world to interconnect. मैं यहाँ पे बैठे बैठे कितने लोगों के साथ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकती हूँ. That is possible because of internet. Sometimes it is referred to as a network of networks. And the World Wide Web, commonly known as web, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पे डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेस are identified by URL, Uniform Resource Locator. ठीक है. World Wide Web, www.google.com. It's an example. Okay. So let me go back. Sorry. Internet is larger than intranet. Intranet is larger than internet. Internet and intranet are same. Internet is a network of networks. And World Wide Web is an example of intranet. इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है? Yes. Okay, Anusha, Smriti, Anupama, Prakati. Anusha again changed the answer. Anusha, please pay focus. Which option you want to lock finally? I was searching for DNE, but I am not finding the combination, ma'am. So Okay. got confused. Obviously, intranet छोटा है, इंटरनेट बहुत बड़ा है. This is correct. इंटरनेट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लार्ज नहीं हो सकता in comparison to internet. So this is wrong. इंटरनेट एंड इंट्रानेट आर सेम, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. Internet is a network of networks. Absolutely correct, because it connects multiple networks together. And www is an example of internet, not intranet. So आपका options क्या क्या बच रहा है? A and D. So your correct options are A and D. So the correct answer is 2. Clear all of you? Yes, ma'am. 14th question, very very easy, based on ICT. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से लिस्ट 1 में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लिस्ट 2 में आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, MS PowerPoint, Windows XP and C++. You have to match. Okay, Priyanka, that's good. Himani, that's good. Shwetalina, okay. Krishna, okay. Fine, let's understand what is a programming language first. A programming language is a vocabulary. ठीक है, ये एक vocab है जिसमें बहुत सारे grammatical rules हैं. Okay, for instructing a computer or computing device to perform specific tasks. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे बेसिक C, C++, COBOL, Java, Fortran, okay, Pascal. These are all examples of programming language. Similarly, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, डेस्कटॉप खोलो, कुछ भी खोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप खोल ही नहीं सकते हो. So it's an interface between a computer user and computer hardware. एग्जाम्पल्स क्या हो गया आपका? विंडोज, OS X, लिनक्स, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक प्रोग्राम है या फिर एक
ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि आखिरी एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल्स है आपके वर्ड प्रोसेसर, अगर हम फोन पे इंस्टॉल ना करें तो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं खुलता है। स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, email client, a media player, file viewer. So these are known as application software, and internet we have seen in the previous question. Yes, the correct answer is option number 2. Absolutely correct. Subhashri and all others are correct. Next. Question number 15. The most easiest question till now. Okay, again you have to match. एक साइड पे आपका नंबर्स दिया गया है, एक साइड पे आपका स्क्वायर्स दिया गया है, स्क्वायर रूट। तो आपको बोलना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 9 का स्क्वायर कितना है? 81। 29 स्क्वायर कितना है? 841। ओके, कृष्णा गिव मी एन आंसर। बाप रे, हैव यू मग्ड इट अप? कृष्णा, हैव यू मग्ड इट अप? Yes, ma'am. 203 square is 41209 and 232 square is 53824. So the correct option is answer number 4. Clear? Okay, good. Question number 16. Another statement question. There are two statements, one compound interest, one is on simple interest. Compound interest क्या है? Involves the reinvestment of the earned interest which in future years also earns interest. तो compound interest वो बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? जो भी हम इंटरेस्ट अर्न किए हैं हम फिर से उसको रीइन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में भी वो इंटरेस्ट पाए, उसको मिले। कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला जा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट है, इट्स द अमाउंट अर्नड और पेड ऑन अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं या पे कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, सही बैठ रहा है आप लोगों को? So before that you need to understand what is simple compound interest. Simple interest is determined by multiplying the daily interest rate by the principal by the number of days that elapse between payments. And compound interest क्या है? जो principal है, addition of interest to the principal sum of a loan. और आप बोल सकते हो interest और interest on interest. It is the result of reinvesting interest rather than paying it out. Okay. So अब ऑप्शन बोलिए, देखिए आंसर बोल कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। Yes. Only 4 of you have given the answer. Okay. Okay, Jayanti and all. Yes, the correct answer is ये वाला स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है, बट सिंपल इंटरेस्ट हमको कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिला है, मिल ही नहीं सकता है। So statement 2 is false. Statement 1 is correct. So the correct option is option number 3.
Question number 17. The chronological sequence of institutions of educational communication is. इनके chronology के हिसाब से आप इनको सजाइए, year के हिसाब से. Chronological sequence of institutions is AIR, CEC, UGC Countrywide Classroom, Gyanvani. Yes, okay, many of you have tried. Fine, let's see. ऑल इंडिया रेडियो, इसको हम आकाशवाणी के हिसाब से भी जानते हैं. 1957 से we know officially, but it was established in 1936. It's a sister service of Prasar Bharati's Doordarshan, and it was founded in the year 1930. इसका मोटो है बहुजनाहित्य बहुजना सुखन्या. Headquarters are in New Delhi and owner is DD National. Similarly, CEC, Consortium for Educational Communication, popularly known as CEC, ये inter-university centers is one of the inter-university centers जो UGC ने set किए थे. And क्यों set किया गया था इसको? ताकि goal of addressing the needs of higher education through television. Okay, with the help of television, जो भी higher education का requirement है, that can be fulfilled. And CEC emerged in 1993 as a nodal agency to guide, coordinate and facilitate educational production at the national level. आज के डेट पे 21 मीडिया सेंटर काम करते हैं CEC के अंडर. यूजीसी ने कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम्स भी शुरू किया था 1984. एंड ये क्लासरूम वाइड प्रोग्राम्स, कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम्स विल बी हेल्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन. 1984 में शुरू किया था. ज्ञानवाणी GAV FM रेडियो ये कंसीव हुआ था 2001 में एज अ नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल FM रेडियो चैनल्स operating from various cities in the country. So what are the sequence? First is All India Radio. Next है आपका country wide classroom programs. Next है आपका CEC. Next है आपका ज्ञानवाणी. First है आपका AIR. Second है आपका country wide classroom. Third है आपका CEC. Fourth है आपका ज्ञानवाणी. So which option is correct? A, C, B, D. A, C, B, D. Option 1 is correct. Understood, all of you? Okay. Question number 18. Research ethics के ऊपर. The scope for violating research ethics is considered to be relevant in respect of which of the following stages in a research study? इनमें से कौन से stage में it's very important or scope for violating research ethics is considered to be relevant in which of the
following stages in a research study? Hypothesis formulate करने के टाइम पे, scope of research जब हम फ्रेम कर रहे हैं तब, या इंटरप्रेट कर रहे हैं रिसर्च डेटा, या पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग मेथड जब हम डिफाइन कर रहे हैं, या फिर फाइंडिंग्स के टाइम, कौन से टाइम पे हम वायलेट कर सकते हैं रिसर्च एथिक्स को? एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो. See, before going to the answer, we need to understand what is the research ethics. Provides guidelines for the responsible conduct of research. Research ethics guidelines देता है, provide करता है कि ऐसे आप conduct कर सकते हो. और research process में ये सारे points हैं. Topic select करेंगे, research problem हम define करेंगे, objective of research finalize करेंगे, literature review निकालेंगे, hypothesis frame करेंगे, research design करेंगे, sample design करेंगे, data collection, तब हम जाके project execution पे काम करेंगे, data analysis and hypothesis testing के ऊपर focus करेंगे, generalization and interpretation of findings, and then the report. So based on this data, this knowledge, please try to answer this question. Scope of violating research ethics is considered to be relevant in which of the following stages in a research study? Okay. Dual answers I'm getting from 2 and 4. The correct answer is option 1. Only when we are analyzing and interpreting research data, and when we are reporting the research findings, using the same as a basis for policy formulation. These are the two stages where the scope of for violating research ethics is considered to be relevant. Okay, only in these two stages. बाकी कोई stage पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. Question number 19. A percentile, again statement based questions. A percentile divides the distribution into 100 equal parts. Range is the distribution between 0 and the highest value. इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिए. Choose the most correct answer. Appropriate answer.
Okay. फाइन. सो बहुत लोग आंसर्स किए हैं. 1111 माय गॉड. आई डाउट. सी देखो, दिस इज करेक्ट. परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. डिकाइल 10 पार्ट में डिवाइड करता है. बट रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू, ना कि जीरो. नॉट जीरो. Lowest value and highest value. So statement 1 is correct, but statement 2 is false. Okay. So the correct answer is 3. Clear? Very, very important question again. Question number 20. While reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile ranks in place of scores obtained by his or her students. What kind of evaluation will it be called? जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट जब हम एक्सेस कर रहे हैं, एक कॉलेज टीचर ने परसेंटाइल रैंक यूज किए, ना कि स्कोर यूज किए. सो इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन बोला जाएगा? इज इट क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड, फॉर्मेटिव रेफरेंस्ड और समेटिव रेफरेंस? ठीक है, उससे पहले हम जाने क्राइटेरियन और नॉर्म का मतलब क्या है. नॉर्म रेफरेंस में क्या है? ओके, अनुषा एंड श्वेता लीना. नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट्स कंपेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप. ठीक है, नॉर्म में क्या होता है ना, ग्रुप के साथ आपका कंपेयर किया जाता है. बट क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट्स में how well a student has mastered a specific goal or objective, उसको हम एक्सेस करते हैं इन केस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट्स. Student performance is judged by how closely the performance matches specific criteria, not by how the student compares to others. So norm और criterion के बीच में, नॉर्म में क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है. बट क्राइटेरियन में इंडिविजुअल बच्चे को अपने साथ ही पूरा क्लियरली थॉरोली एक्सेस किया जाएगा. फॉर्मेटिव असेसमेंट ये एक ऑनगोइंग मेथड है, फ्लेक्सिबल है. ओके, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूस. बट समेटिव क्या है? समेटिव पूरा आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे है टू इवेलुएट. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं. फॉर्मेटिव में इन क्लास डिस्कशन, क्लिकर क्वेश्चंस, लो स्टेक्स ग्रुप वर्क, वीकली क्विजेस, ये इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इनफॉर्मल प्रोसेस बट ऑनगोइंग, हमेशा चलता रहता है. बट समेटिव में केस में क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट्स, फाइनल एसेस, इंस्ट्रक्टर क्रिएटेड एग्जाम्स, ये सारी चीजें आते हैं आपके समेटिव में. सो जब एक कॉलेज टीचर रिजल्ट जब रिपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज टीचर ने जब परसेंटाइल रैंकिंग दिया, नेट पे आपका मैक्सिमम परसेंटाइल आता है. क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल आपका चेक किया जाता है, हाउ यू आर, नॉट हाउ यू आर अगेंस्ट अदर्स. आपने कितना स्कोर किया है, आपका कितना परसेंटाइल आया है, उस हिसाब से. सो हियर द आंसर. ओके, what kind of evaluation will it be called when we are looking for assessment of a college teacher who checks the percentile ranks in place of scores obtained by his or her students? So यहाँ पे आपका आंसर आएगा नॉर्म रेफरेंस. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे कॉलेज टीचर ने परसेंटाइल, सपोज मैं बोलूंगी कि मेरा 95 परसेंटाइल आया है, तो मतलब क्या है, मेरे ऊपर और इतने बच्चे हैं,
या फिर मेरे नीचे इतने बच्चे हैं, 95 से नीचे जितने भी हैं वो सारे दे आर बियॉन्ड मी, बिलो मी. सो इट्स अ केस ऑफ नॉर्म रेफरेंस. सो जस्ट सिंपल रिमेंबर, norm reference tests are compare individual performance with the performance of a group. College entrance tests, IQ tests are norm referenced. क्यों? क्योंकि वहां पे हम इजीली देख सकते हैं एक स्टूडेंट एक ग्रुप के हिसाब से कितना अच्छा स्कोर किया है या नहीं किया है. So the correct option is option 2. Okay. Fine. Next question. What type of fallacy is implied in the following? Fire is cold because it is a substance. Is it badhita, virudha, asadharana, anupsamhan? Let me know. Let me say you. Anupsamhan ऐसा word Indian philosophy पे नहीं है. So this is a confusing word. So badhita, virudha, asadharan. Which type of fallacy is implied in the following? Okay. Fine. So let's see Virudha. Maximum of you have given the answer Virudha. And one Jayanti has given an option 4. Okay. So see, before sharing with you the answer, we should know what is Vadhita, Virudha, and from where these terms came. Okay. Yeah, Subhashri, you are correct. Only one person is correct. That is Subhashri. Indian logic में fallacy error को हम बोलते हैं हेतु भाषा. This fallacy means the middle term appears to be a reason but is not a valid reason. Middle term दिखाई देता है reason के जैसा but वो reason है ही नहीं. Okay. In Western logic, fallacies are formal in nature. Okay. So a fallacy relates to material condition of an inference. So all fallacies are material fallacies. Fallacies में भी 5 कैरेक्टरिस्टिक है. अगर इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक हमारा वायलेट हो रहा है तब fallacy arise होता है. So what are the 5 characteristics that should be present? First is it must be present in the minor term. Okay, the middle term must be major. It must be present in the minor term. Okay. देखो मतलब पक्ष धर्मता. Example, smoke must be present in the hill. So middle term minor term में present होनी चाहिए. अगर नहीं है तो एक error होगा. Second क्या है? It must be present in positive instances in which the major term is present. जहां पे major term present है ना वहां पे positive हिसाब से रहना चाहिए. For example, smoke must be present in the kitchen where fire exists. Negative है लेकिन वो उसको positively दिखा रहे हैं. सपक्षत्वा. Third है it must be absent in all negative instances in which the major term is absent.
जहां पे मेजर टर्म नहीं है वहां से it should not be present there. It should be absent in all negative instances. Smoke must be absent in the lake in which fire does not exist. Vipakshitva. Fourth characteristic है, it must be non-incompatible with the major term. That means it must not prove the coolness of fire. Abhadita. Fifth है, it must be qualified by the absence of counteracting reasons which lead to a contradictory conclusion. Okay, ये qualify होनी चाहिए. बहुत सारे ऐसे reasons हम देंगे, but it must be qualified by the absence of counteracting reasons. Okay, which lead to a contradictory conclusion. So these are the 5 characteristics of a middle term. इनमें से अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो हम इसको एक फैलेसी के हिसाब से मान के चलेंगे. आगे देखो, violation of the above characteristics leads to the following fallacies: savyabhikara, virudha, सत प्रतिपक्का, असिद्धा and badita. हमारे क्वेश्चन में है विरुद्धा एंड बधिता. सो लेट अस फोकस ऑन विरुद्धा एंड बधिता. विरुद्धा मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्टोरी मिडल. विरुद्धा हेतु और द कॉन्ट्राडिक्टोरी मिडल इज दैट हेतु which though offered to establish the existence of the sadhya actually establishes the non-existence of the sadhya. वो आया था साध्य का एग्जिस्टेंस करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली उसको ना एग्जिस्ट करके निकल रहा है. Sound is eternal because it is produced. Here, the middle term produced does not prove the eternality of sound, but proves its non-eternality. देखो, तो it's an error. It is known as viruddha. Similarly, we'll focus on badhita. Badhita or the non-inferentially contradicted middle. इसका मतलब क्या है? The middle term of an inference may be contradicted by some other stronger means of knowing, such as perception or testimony. यहाँ पे हम prove नहीं कर सकते. It cannot prove the major term, which is disproved by another stronger source of valid knowledge. We cannot prove the major term. Okay, for example, fire is cold because it is a substance. यहाँ पे middle term है आपका substance. Okay, becomes contradicted. क्यों? क्योंकि उसका major term क्या है? coldness. वो directly contradict कर रहा है आपके perception के साथ. So badhita and viruddha. Next है आपका असाधारणा. असाधारणा actually is coming under your savyabhikara और अनेकनतिका. Okay, इसका मतलब क्या है? This is the fallacy of irregular middle. असाधारणा मतलब क्या है? यहाँ पे middle term बहुत ज्यादा narrow है. It is present only in the paksha and neither in sapaksha not in vipaksha. खाली विपक्षा में प्रेजेंट है, नाइदर वो सपोर्ट कर रहा है नॉर वो विपक्ष में जा रहा है. इट वायलेटेड द रूल. कौन सा रूल वायलेट कर रहा है? दैट द मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन सपक्ष. हम लोग अभी पढ़े ना सेकेंड पॉइंट, जहां पे मेजर टर्म है वहां पे वो रहना चाहिए, बट इट इज वायलेटिंग दैट. इट वायलेटेड द रूल दैट द मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन द शपक्ष. Sound is eternal because it is audible. Here, audibility belongs to sound only and is present nowhere else. इसको बोला जाता है असाधारणा. So based on these three, the answer is badhita, and badhita was in option 1. Okay. Fine. Next question. Question number 22. Given below are two statements. Again, see. Programmed instructional material uses active responding and immediate feedback as important principles of learning. And statement 2 आपका बोल रहा है Skinner's reinforcement principle is the basis for the preparation of linear types of programmed instruction material. इनमें से कौन सा correct answer है? Okay, which one is the correct answer?
ओके सो ये आंसर जानने से पहले हमको जानना चाहिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब क्या है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो चीज है जहां पे आपको टीचर नहीं है वहां पे। ओके वहां पे टीचर नहीं होगा, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट एसेंशियल। प्रोग्रामेटिकली पूरा का पूरा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मैनर में सारा चीज अरेंज करके आप लोगों को दिया गया है ताकि बच्चों लोगों को डिफिकल्टी ना हो, in such a manner that maximum understanding and retention would be possible. इसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? जो इन द फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्रामिंग इज BF स्किनर। ओके उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि लीनियर प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज करते हैं ताकि एक बच्चा अच्छे से लर्न करे अगर कंटेंट अच्छे से प्रेजेंट किया गया हो। छोटे छोटे यूनिट में स्टूडेंट रेस्पॉन्स इमीडिएटली कंफर्म होती है, रिजल्ट्स इन बेटर लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स एरर क्रिएट हिंड्रेंस इन लर्निंग। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग लिए हैं। सिंपल, वी आर डिवाइडिंग द एंटायर थिंग इनटू small parts and making analysis. That is known as linear programming, and the founder of this programming is BF Skinner. Okay, so based on these two, the answer is option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Okay, so fine, we will stop here. Okay, we are going to stop here. There are 50 questions in paper 1. हमने सिर्फ 22 कंप्लीट किए हैं। कल अगेन we will try to solve, or we will do some 10-15 questions tomorrow also, and then we'll complete on one more day. Okay, जितना पढ़ाया गया है सबको समझ में आया है या फिर कोई डाउट है? पूछिए आप लोग। Any doubts? No, Miss, understood well, but a lot of confusion was there while attempting the answers. Any doubts? Okay. So, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. So let's meet tomorrow. Okay, and we will continue with this set only. We will complete this and then we will go to a different set. Okay. So good night and enjoy. Thank you. And those of you who have your exams ahead, all the best for them. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.